की राह में ये कौन नहीं जानता, मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता। मेरे साथ है इस वक्त एडवाइजर टू गवर्नर सर श्री धर्म पाल सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए। Thank you very much for coming. थैंक यू सो मच सर। सर स्वच्छ सर्वेक्षण की ब्रांड एम्बेसडर 2022 की ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि चंडीगढ़ को 12वां रैंक मिला है अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण। सर आप क्या कहना चाहेंगे? No, thank you very much. I think that improvement in rank was as a result of series of initiatives that we took during last 2 years. Right. So we are not happy with 12th even. We Yes. want to go improve further, and our attempt should be that we should be at least in the top 5. Right. बिल्कुल। Yeah. बिल्कुल। So that is our attempt. जी। But there are a few challenges that we are facing, जी सर। and hopefully I think within a year or so जी। we should be able to overcome most of the challenges that we have, and we should be on track to become number 1 city in the country. क्या बात है सर। कोरोना टाइम की अगर बात करें तो हमने डटकर सामना किया सभी चैलेंजेस का। तो सर अब 2023 में हम कौन-कौन से मैदान फतेह करने वाले हैं? I think एक तो हमारा the first thing would be, I mean, my target is to become number 1 city in the country and to make Chandigarh best in all aspects. जी सर, जी सर। And I think it is doable as far as Chandigarh is concerned. And number 2, we are focusing a lot on carbon neutrality, education and forest and our jail. That is already almost carbon neutral. So data has been collected, and they have said that we have now net zero billing is coming. And actually, it's a plus. I mean, they don't pay anything for their electricity bills, but we are studying that issue. And then entire city we need to make it carbon neutral, so that it's totally we don't put any kind of pressure on environment. So for that we are in a big way promoting non-motorized transport. Our public bike sharing system is one of the largest in the country. So we just want to promote it among the at the moment. As you were saying, it's not really very everybody is not using it. जी सर। I want everybody to use it, so we will create 11 corridors. At the moment cycle tracks are along the roads, but we will create a dedicated green cycle corridors. क्या बात है? 11 more, so बात that people are very happy when they drive in those corridors. जी। So we want to make it very attractive, जी those सर। corridors, so that everybody should pick up the cycle and go around in the city. बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि सिटी है ही इतनी ब्यूटीफुल, तो अगर साइकिल पे आई थिंक इसका लुत्फ ना उठाए तो बिल्कुल। काफी नाइंसाफी होगी You चंडीगढ़ के can, साथ। if you go on a cycle, you can feel the environment, you can appreciate the beauty around you, and so we want people to do that. बिल्कुल। तो सर सिटी की अगर बात करें तो बहुत ही स्मार्ट यहाँ के रेजिडेंट्स हैं और साथ में स्मार्ट सिटी भी हैं। तो सर 3 ऐसे मुद्दे जो आई थिंक कहीं ना कहीं, चाहे हम जितना मर्जी इग्नोर करने की कोशिश करें, लेकिन हमारी डे टू डे जिंदगियों में ये हमारे सामने आते हैं, और वो है पीपीटी, जिसे हम कहते हैं पार्किंग, पोल्यूशन और ट्रैफिक। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कार्बन न्यूट्रलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द पोल्यूशन. So if we use less vehicles, less number of vehicles, use more green vehicles like electric buses, or use bicycle or electric bikes, I think that will have a huge impact on pollution. And we are already increasing the green cover. We are the only city probably in the country and perhaps in the world which is having a 50% green cover. So we are focusing on that. We want to beautify and our number of parks that we have, wonderful parks that we have, and our greening activities. There is a lot of focus on that. जी सर, बिल्कुल। तो सर वो कहते हैं ना कि मंजिल को पाना है, रुतबा मुझे तुझ जैसा नहीं तुझसे भी बेहतर बनाना है। तो ट्राई सिटी किस वो परफेक्शन की तरफ बढ़ रही है? ट्राई सिटी के हमारे चंडीगढ़ में पॉलिसीज आर वेरी क्लियर एक्चुअली. आई थिंक ट्राई सिटी में they will have to match our policies. And the similar kind of building bylaws need to be there in both Panchkula and Mohalli. Similar kind of policy need to be followed with regard to construction of commercial, residential and other areas. And so if we could integrate Tri-City into Chandigarh and make it as good as Chandigarh, I think that should be the ultimate objective. But through the public transportation system, we are trying to integrate
not only Panchkula, Mohali, even neighboring towns जी सर। within the transportation system of Chandigarh. जी सर। तो सर अगर ट्राई सिटी की जनता को अगर आप एक मैसेज देना चाहें, क्या है ना कि जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो मुकद्दर का सिकंदर होता है, तो आप क्या वो मैसेज देना चाहेंगे ट्राई सिटी वालों को जिससे कि हम सब मिलकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, क्योंकि एकता में बल है। देखिए ये हमारा शहर है, अपने इसको ओन अप करना चाहिए, और एक तो क्लीनलीनेस इज द मेन इशू. आई थिंक इन द particularly in the villages, I think there we need to pay a lot more attention about our segregation of waste. जी सर। Collection and segregation of waste. We need to segregate the waste. And बाहर जो जनरली चीज़ें फेंकते हैं, हमारी इंडियंस की आदत रहती है, चंडीगढ़ में perhaps इतना नहीं है, बट आई थिंक ट्राई सिटी के नियर बाय एरियाज में उनको ये इस चीज़ों पे सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट पे और अपने डस्टबिन में फेंके, बाहर कचरा ना फेंके, जी सर, जी सर। उसमें फोकस करना चाहिए. और वट एवर वे यू कैन मेक कंट्रीब्यूशन टू द सिटी, यू नीड टू डू दैट. यूज मोर ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, use cycle, use electric buses that we have introduced. I would also urge that even Punjab and Haryana, they should also go electric. Tell the people. Thank you so much. Thank you so much.